Namaste everyone. I am Rupanshi Bhatt, your host and co-founder of Tea Villa Cafe. Welcome to our YouTube channel where we bring Tea Villa Cafe to your kitchen. सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी। आप लोगों ने जितना प्यार टी विला कैफ़े को दिया है उतना ही प्यार आप इस चैनल को दोगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट सेलर डिश ऑफ टी विला कैफ़े विच इज़ क्रीमी पिंक सॉस पास्ता। आज हम यूज़ करने वाले बरीला पास्ता विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इटली, 100% durum wheat and no maida। बातें तो होते रहेगी but without wasting more time, let's start cooking। So for boiling pasta, we need 1.5 liter of water, 1 teaspoon salt, we'll put 2 bowls of pasta। So today I'm using Penne Pasta, but you can use whatever you like, spaghetti, fusilli, जो आपकी चॉइस हो वो आप डाल सकते हो। तो पास्ता जो है वो हमें सिर्फ 80% कुक करना है, 100% नहीं। So till the time this pasta is getting cooked, let me tell you one interesting fact. There are 600 types of pasta and commonly we use only spaghetti, penne, fusilli। तो अभी हमारा पास्ता कुक हो चुका है। लेट्स स्ट्रेन इट और हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रे करेंगे ताकि इट्स नॉट स्टिकी। एंड नाउ लेट्स मेक आवर सॉसेस। वाइट सॉस के लिए हम लेंगे पहले 1 टीस्पून बटर, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और हम फ्लेम को एकदम धीमी आंच पे रखेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। फ्लेम को आप अपने धीमी आंच पे रखना और हमें उसको थोड़ा हल्का सा ब्राउन टेक्सचर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अब हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मिल्क और उसको अच्छे से हिलाइए। मेक श्योर देयर आर नो लम्प्स व्हाइल कुकिंग। लेट्स ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट या जितना आप चाहें आपके स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स एंड स्टफ वेल। अब हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3। लेट्स मेक रेड सॉस। वील पुट इन फ्रेश टमेटोज, so as you can see our tomatoes are blanched। से थोड़ा ठंडा होने देते हैं। So now our tomatoes are peeled very nicely। As you can see, they're ready to make red sauce। Let's put 1 tablespoon butter, oil। This is 3 cloves of garlic finely chopped, some herbs, basil and 1 spoon sugar। The puree tomatoes what we made, tomatoes what we had blanched is now in puree। Put some tomato sauce, stir it well and our red sauce is ready।
let's go to step 4 and our final stage to make pink sauce pasta. So now for our final stage pink sauce pasta, let's put some butter, oil, celery, baby corn, mushroom, zucchini, and my favorite broccoli, bell peppers, and put salt, few herbs, bit of black pepper, chilli flakes, and now let's put our sauces, our red sauce, stir it well. White cheesy sauce. तो इसको जब हम बना रहे हैं तब आप अपने हिसाब से चीज़ सॉस डाल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी रहता है. So put according to your taste and we'll put some cream. थोड़ा इससे हम अच्छे से stir करेंगे. Let's put now our pasta. Now let's put Parmesan cheese to get cafe style taste. Smell delicious. Now let's serve in our bowl. So now as you see, our pink sauce pasta bowl is ready. And for the final touch, let's sprinkle some Parmesan cheese. Yum! Some basil leaves. And let's garnish with fresh basil leaves. And do serve it with yummy garlic bread. And now our delicious yummy pink sauce pasta is ready. Tea Wala Cafe style. Do share this recipe with your friends and family and let me know how did you like it. Do share, like and subscribe this channel. Your kitchen is a part of Tea Wala Cafe. Thank you and see you soon with another recipe.